Good afternoon, dear students and concerned teachers. I am Smita Patel from TPS High School, Bandpali. Welcome you all to this live virtual class from our Sundargarh district. Yes, students, I know today your body is in the class, but you are practically not here in the class because our Dasera holidays begins from tomorrow. So all of you are now in somewhere else. But what to do? We have to learn. So let's start our today's class. Dear students, most of the time in holidays we used to prefer to go somewhere else, to our cousin's house or to visit some places. So if you will ask me, I will prefer to go to visit natural places or to go to the village area and instead of urban places, because when we go to the nature towards the nature, we feel so relaxed instead of urban areas. Why? In urban areas you can find only vehicles and buildings, lots of buildings, but in natural places you can find peace. You will intake what? Proper air, healthy air in your body. But that not happens in urban places. So many pollutions everywhere. Yes or not? So during holidays we find lots of fun when we visit to nature. So let's find what are the pollution, why urban areas are not safe for us. Let's go to the smart board. Hey students, here you can see pictures. This is the picture of nature and this is picture of urban areas. So in this picture you can find so many crowds and so many buildings are there. Here also so many busy vehicles are there. These are the pictures of urban areas. And this is the picture of our nature. So this picture shows, it seems so peaceful to visit. Yes or no? And this picture contains hidden men. What is that? If you will go through the chapter, you will understand why we feel relaxed in this area and why we feel so much hesitate to go to these areas. See, air pollution, a hidden menace. So, let's read the text. No one can forget one of the most tragic industrial accidents that occurred at Bhopal on 3rd December 1984. Deadly gas from a chemical plant operated by Union Carbide escaped into the atmosphere, killing over 4,000 local residents and rendering blind and crippling large section of the city's surviving population. So dear students, first of all, we understand the unknown words. I will not say difficult words, as I used to say. These are unknown words. कौनसी शब्दटा डिफिकल्ट नुहे जे पर्यंत ताहा हमकु जणा नाही. जेतेबेले आमे ताहा अजणा शब्द आमे कहिबा. डिफिकल्ट कौनसी शब्द नुहे. ताकु जदि आमे बारंबार प्रैक्टिस करिबा ताहले से डिफिकल्ट किंबा अननोन वर्डटा कोन आसीबो तम नोन डिक्शनरी रे आसी जिवो. तेनु तुमको कोन करिया को पड़िबो बारंबार सेही शब्द गुडी को प्रैक्टिस करिया को पड़िबो. So first we will see what are those words. Okay. Industrial, relating to industry, means silpa sambandhiya. Right? Union Carbide, this is the name of the industry in Bhopal. Bhopal thare gote industry ro athiba gote karkhana ro namo Union Carbide. Crippling means damaging, pangu koriba. Victim, someone who suffers as a result of something. कौन को आजे विक्टिम को आजे शिकार हेबा. एयर पोल्यूशन, व्हेन एयर गेट्स पोल्यूटेड, वायु प्रदूषण
एटा तुम जानिछो मेनेस मीन्स थ्रेट चेतावनी ट्रेजिक मीन्स फ्राइटफुल दुखद रेंडरिंग ब्लाइंड मीन्स अंध करदेवा So dear students, no one can forget one of the most tragic industrial accidents. विभिन्न प्रकार एक्सीडेंट हेई थाए किंतु एटा एपरि एक दुर्घटना घटी थिला इंडस्ट्रियल बेसिस रे जोटा कि बहुत दुखदायी थिला काहे कि ना एकाथरो के केते जण 4000 पीपल कोन होइथिले मृत्युवरण करिथिले एवं एहा केबे घटी थिला ना 3 डिसेंबर 1984 रे घटी थिला कोठी घटी थिला भोपाल रे आमे देखिबा हमरो ए मैप रे देखिबा भोपाल कोठारे अवस्थित एटा होची मध्य प्रदेश रो राजधानी रो नाम होची भोपाल नै एठारे देखो पॉइंट आउट कराई छी भोपाल थारे एहा घटी थिला एवं सेई जो ट्रेजेडी घटी थिला तार पिक्चर तुमे देखि पारुथबो केते मर्मन्तुद होई पाइछि एवं एथरे जो गैस निर्गत होइथिला सेटार नाम होची मिथाइल आइसोसियानेट से डेडली गैस निर्गत हेबा द्वारा बहुत क्षयक्षति जीवन मानकर घटी थिला कौन थिला डेडली गैस फ्रॉम ए केमिकल प्लांट एटा जो प्लांट अछि सेटा होची केमिकल प्लांट एवं सेठारे कोन हला ना एटमॉस्फेयर को ताहा चारिआडे से मिश्रित हो गला एवं 4000 लोक कोन हेले मृत्यु मुख को आसी गले एवं केते जण अंध मध्य होई गले एवं पंगु मध्य लार्ज सेक्शन ऑफ सिटीज पॉपुलेशन कोन होई गले पंगु मध्य होई गले तेणु एहा को कोन को आजे बहुत दुखदायी घटना नहीं कैन सी द पिक्चर्स हाउ dreadful how frightful it is so not only Bhopal but now every city every town every corner of the earth is facing such a crucial problem every day every moment we breathe polluted air and may become a victim of air pollution एटा केवल भोपाल रो कथा नुहे कोन in each and every corner of the earth we are facing same problem why because of this industrial area and because of these vehicles you can see kete matra re amaro janavahana चलाचल होउची इंडस्ट्री मानकरू केते प्रकार विषाक्त धुआं निर्गत हेउची नै तेणु एगुडा को आमे इनटेक करबा द्वारा आमे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग समय रे एहा गुडी को आमे इनटेक करबा द्वारा ताहा हमकु बहु मात्रा रे क्षयक्षति करूची मैं देखि परहो ताहा डायरेक्टली हम लंग्स को जाउची एवं विभिन्न प्रकार डिजीज लिवर डिजीज स्ट्रोक तापरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ तापरे डायबिटीज हेडेक डिजीनेस आई इरिटेशन तापरे असला नोज इरिटेशन नोसिया हार्ट डिजीज बहुत प्रकार रो कोन होची एहा हमकु इफेक्ट करूची सो नॉट ओनली भोपाल एटा केवल भोपाल रो कथा नुहे नाउ इट इज ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी रो जे कोनोसी कोण को जाओ तमे माने सेही प्रॉब्लम आमे फेस करूछु एवरी डे एवरी मोमेंट वी ब्रीथ आमे ब्रीदिंग करूछु कोन पोल्यूटेड एयर आमे ब्रीथ करूछु नेक्स्ट ए मैन कैन लिव विदाउट फूड फॉर ए मंथ without water for 2 or 3 days, but he cannot live without breathing even for a minute. It is essential that an average adult exchanges 15 kg. It is estimated that an average adult exchanges 15 kg of air a day, in comparison to about 1.5 kg of the food consumed and 2.5 kg of water intake. It is obvious that the quantum of pollutants that enter our body through respiration would be manifold in comparison to those taken in through polluted water or contaminated food. First we will understand the unknown words. What are these? Intake. Intake means what? Consumption. Grahana kariba. Okay. Then manifold means of many different kinds, बहुत एवं विविध. Contaminated, impure, दूषित. तापरे आसा respiration, breathing, श्वासक्रिया. तापरे quantum,
यह गोटे कौन अटे वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मात्रा बा हमें कहि परिबा परिमाण तो कौन होची ना ए मैन कैन लिव विदाउट फूड फॉर ए मंथ हमें मासे न खाई की रही परिबा विदाउट फूड हमें केते दिन रही परिबा 30 दिन आराम रे तो नुहे कष्ट हेबो किंतु से सर्वाइव करि परिबो बंची परिबो विदाउट फूड फॉर ए मंथ विदाउट वाटर फॉर 2 or 3 days 2 or 3 days हमें विदाउट वाटर हमें रही परिबा आउ बट ही कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग हमें फॉर मिनिट रही परिबा नहीं It is estimated that an average adult exchanges 15 kg of air a day. एटा गोटे कलना करा जायछि जे आमे गोटे सुस्थ मनीष दिन को केते 15 kg ऑफ एयर एक्सचेंज जो करि थाए 15 kg ऑफ एयर करि थाए एवं सेही तुलना रे से खाद्य केते केते केजी नै थाए ना खाद्य से 1.5 kg कंज्यूम करि थाए एवं सी तुलना रे वाटर केते ना 2.5 kg नै थाए एथिरे आमे देखि पारिथुबा जे हमर एयर रो मात्रा ढेर बेसी अटे आ तुलना रे खाद्य एवं पानी तुलना रे नहीं so it is obvious that the quantum of pollutants that enter our body through respiration would be manifold in comparison to those taken in through polluted water or contaminated food हम जो आमे हमरो इंटेक जो करूछु सेटा कोटा बेसी करूछु आमे देखिबा खाद्य ओ एस्टिमेटेड जो कराइछि ता रे देखिले जे हमरो खाद्य ओ वाटर तुलना रे हमें एयर रे बेसी इंटेक करूछु जेहेतु हमें एयर बेसी इंटेक करूछु सेइथिरे माने एयर माध्यम रे ही हमरो पोल्यूटेड जिंस गुडी को बेसी मात्रा रे हम शरीर भीतर को एंटर करूछि एवं ताहा बहु मात्रा रे हमकु कोन क्षयक्षति करूछि आ तुलना रे खाद्य एवं वाटर तुलना रे एठी हमें देखि परिबा हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन केमती हमें जो एयर टाकू नौछु पोल्यूटेड एयर नहीं ताहा बहु मात्रा रे काहे कि ना हमें जेहेतु 15 गुण हमें नौछु एयर एवं सेही मात्रा रे हमें देखिबा को गले हमरो खाद्यटा केते केते हला 1.5 kg एवं वाटरटा हला 2.5 kg तारो मात्रा हमरो एयर तुलना रे बहुत कम ले ए जो एयर हमें नौछु पोल्यूटेड एयर हमको कोन करूची हेडेक रेस्पिरेटरी डिजीज माने होची नहीं तापरे कार्डियोवास्कुलर डिजीज माने होची तापरे हमको इंपैक्ट करूची कोडे रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे भी इंपैक्ट करूची तापरे स्किन इरिटेशन होची आई इरिटेशन होची नाजल प्रॉब्लम रहउची नहीं एही प्रकार रो विभिन्न प्रकार रो प्रॉब्लम हमको होची सेति भाई कहै छी जे खाद्य एवं वाटर तुलना रे एयर माध्यम रे हम बहु मात्रा रे हम हेल्थ इफेक्ट पड़ुची नेक्स्ट देखिबा एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर आमे जानि छु तुमे साइंस रे भी पढि थबो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस वो केते केते परसेंट रही छी हमरो 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन एंड ए लिटिल लेस देन 1% आर्गन together with 0.03% carbon dioxide. All these elements make up 99.9% of dry air. As long as this composition is maintained, the air is pure. If this composition is altered, this is the oxygen level gets reduced or irritating gases enter the atmosphere, then the air is said to be polluted. And inhalation of this polluted air can lead to respiratory disorders. Our air is being poisoned with the byproducts of an expanding technological society. Air pollution is nothing new, but what is new is the scope and severity of air pollution. So let's go to the first unknown words. Severity means what? Harshness, kothurata. Byproduct, something that is formed during the making of something else. Byproducts जेमति कि हमें गोटे जिंस तयारी करबा समय रे कोन हमरो अन्य जिंस मध्ये फॉर्मेशन हेइ थाय जेते बेले हमें निया जळी थाउ कोन सिथिरे
हंस मध्य उत्पन्न होता है एवं धुआं मध्य निर्गत होता है दैट इज द बाय प्रोडक्ट्स आनुषंगिक उत्पाद तापरे आसला तुमर एक्सपैंडिंग टू मेक समथिंग बिगर विस्तारित करबा टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी मीन्स कोन प्रौद्योगिक समाज सो लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट Air is a mixture of gases comprising 78% of nitrogen. आमर जो air composition अच्छी सेइथरे आमर नाइट्रोजन रो मात्रा केते 78% माने सबुथरु बेसी कोडा अछि सबुथरु बेसी मात्रा अछि आमर नाइट्रोजन रो नै तापरे असला कोन ऑक्सीजन 21% कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एहा परे आर्गन आसिला तमरो आर्गन रो मात्रा बहुत कम less than 1% अछि एवं these elements all these elements are making mixture of dry air that is 99.9% एवं जहाँ बची गला कोन वाटर वेपर आकार रही थाए as long as this composition is maintained जे पर्यंत एही जो composition अछि सेटा मेंटेन हेकरी अछि से पर्यंत एयर टाकू आमे विशुद्ध बोली कहिबा मात्र प्योर बोली कहिबा नै If this composition is altered, एही जो composition रे टिके माध्य changes आसिले द माने changes केमती ना द ऑक्सीजन लेवल टिके बढ़ी जबो किंबा कोनोसी गुटे इरिटेटिंग गैस में विषाक्त कर गैस रो परिमाण जदी बढ़ी जबो हेले कोन हो पोल्यूटेड एयर जदी बढ़ी जबो ताहले सेटा आउ विशुद्ध होई रही परिबो नाही ताहा को हमें इम्प्योर कहिबा नै सेटा कहै छी दिस इज द ऑक्सीजन लेवल गेट्स reduced or irritating gases enter the atmosphere, then the air is said to be polluted. And inhalation of this polluted air can lead to respiratory disorders. एवं एई जो आमे जदी एही impure air को आमे जदी intake करिबा आमे respiratory disorders सब diseases सब आमे कोन हम आड़ को आम देहरे देखा जिवो Our air is being poisoned with the byproducts of an expanding technological society. एवं धीरे धीरे आमर कोन आमर टेक्नोलॉजी रे विभिन्न प्रकार कोन आसुची जेतकी एडवांसमेंट होउची जेतकी सब प्रोडक्ट्स बाहरुची से अनुसार आमर पोल्यूशन रो मात्रा मध्य धीरे धीरे बढ़िबारे लागिची काहेकिना सेगुडी को यूजेस कला परे सेगुडी को आमर वायुमंडल को कोन बहु मात्रा रे इफेक्ट होउची जेमति कि हमर रेफ्रिजरेटर जो गैस निर्गत होउची तापरे हम विभिन्न प्रकार गैस जेमति कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एगुडी को हमर वायुमंडल को कोन ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि करिबारे ताहा हेल्प करूची ए सब जिंस एते मात्रा रे हमर एडवांसमेंट होउची सेते बारे हमें एसी यूज करूचू तापरे विभिन्न प्रकार न्यू टेक्नोलॉजी और विभिन्न प्रकार कार बहु मात्रा रे हमें व्यवहार करूचू एबे धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल आड़ को हमें गति कलुनी हेले मध्य बैटरी चालित गाड़ी हमें यूज करूचू हेले मध्य कोन एहार मात्रा तार बाय प्रोडक्ट्स में विभिन्न प्रकार पॉइजन गैस रो कोन मात्रा कमी नाही व्हाट इज न्यू इज नथिंग एयर पोल्यूशन इज नथिंग न्यू एहा किसी नूतनत्व नाही किंतु एहा कमीबारे मध्य कमी लागिनी ताहा धीरे धीरे कोन होइची बढ़िबारे लागिची हमें बुझिले विभिन्न प्रकार डिजीजेस होची नेक्स्ट हमें देखिबा इन रिसेंट टाइम्स quite a large number of industries can be seen in urban areas as well as in rural pockets. Most of these industries spew dense smoke from their chimneys. What is this smoke made up of and how is it produced? Industries require steam and to produce it various fuels such as coal, coke, furnace oil are burnt. During burning, along with heat, smoke is also produced. Where does this smoke go? Apparently, it disappears in a short time, but in reality, it never does so. Instead, it mingles with the atmospheric air and pollutes it. We respire this polluted air containing obnoxious gases as and dust particles.
Without our knowledge, our lungs slowly become garbage dumps for these pollutants. First, understand the meaning of unknown words. Spew means cloud. Nirgata heba, obnoxious means unpleasant, apritikaro. Tapre asla furnace oil, a fuel oil. Apparently, which is not suitable. Dumps means to get rid of something that you don't want. जोटा तुम्हें चाहो नहीं ताठारु दूरे जिबा नहीं. In recent times, quite a large number of industries can be seen in urban areas. आमे एबे धीरे धीरे देखिबा को पाउछु जेमती हमर जनसंख्या बढ़ी चली छी सेही अनुसार हमर कोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन इंडस्ट्री रो मात्रा भी अर्बन एरियाज मानकरे बढ़िबारे लागि छी. तेणु मोस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज स्पीव से माने निर्गत करंती एही इंडस्ट्रीज माने को लार्ज नंबर ऑफ कोन स्मोक नहीं धुआं निर्गत होई थाए फ्रॉम द चिमनीज. यू कैन सी हियर लार्ज नंबर ऑफ स्मोक. फर्स्ट किपरि भाबरे हमर वातावरण को जाउ अछि. व्हाट इज दिस स्मोक मेड अप ऑफ एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस. एही स्मोक केमिति निर्गत हुए एवं एहा किपरि तयारी होई थाए. इंडस्ट्रीज रिक्वायर स्टीम. हम विभिन्न इंडस्ट्री विभिन्न जंत्रपाती इंडस्ट्री मानकरे विभिन्न जंत्रपाती चलिबा पई कोन दरकार स्टीम दरकार हुए. एंड टू प्रोड्यूस इट एहा को प्रोड्यूस करिवा पई वेरियस फ्यूल्स हमरो विभिन्न प्रकार कोन कोल कोक फर्नेस ऑयल एगुडी को सब व्यवहार करा जाय. तापरे सेही गुडा को जते बेले बर्न करा जाय तुमे चित्र रे देखि परथुओ एगुडी को जते बेले कोक कोल एगुडी को बर्न करा जाय सेते बेले कोन हमरो विभिन्न प्रकार जिंस जोटा दरकारी जिंस तो बाहर थाए ता सहित विभिन्न अदरकारी के पोल्यूटेड जोटा करि थाए हम वातावरण को ताहा मध्य निर्गत होई थाए. एपरेंटली इट डिसअपियर्स माने धीरे धीरे कोन होई थाए सेगुडी को डिसअपियर हेई जाय वातावरण रे. देखि तमर वायुमंडल रे ताहा मिलै जाय मात्र. बट इन रियलिटी इट नेवर डज सो. किंतु रियलिटी रे ताहा सेमिति हेई न थाए. कोन होई थाए इंस्टेड इट मिंगल्स विथ द एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेयर रो जो एयर अछि ता सहित ताहा मिसी जाई थाए नहीं. एवं सेही मिश्रित एयर को के आमे समस्त कोन करथाउ ताकू इनटेक करथाउ ताकू ग्रहण करथाउ. एवं सेही जो सेही संगरे कोन थाए डस्ट पार्टिकल मध्ये रही थाए. विदाउट आवर नॉलेज आवर लंग स्लोली ए जो सब हमर गार्बेज भलिया यूज करा जाय कोन आमे जो इनटेक नो जो से सब जिंस रे हमर जो पोल्यूटेड एयर रे जो सब डस्ट पार्टिकल अछि तापरे विभिन्न प्रकार इन्फेक्शियस जो धूलिकणा एगुडे को सब अछि सेगुडी को कोन ताहा गार्बेज रूप रे कोठी को जाय हमर लंग्स को जाई लंग्स थारे इफेक्ट करि थाए नहीं. In this picture, you can see how smoke are mingling with the atmospheric air. So, next, thermal power stations are rated the first among the industries that discharge high amounts of smoke and air. Other significant industries contributing to air pollution are cement, steel, and ore processing industries. Some of the chemical industries also release toxic fumes into the air along with smoke. So, thermal power station means तापज विद्युत केंद्र एवं toxic fumes means harmful gases. So, thermal power plants मानकरे हमरो सबुठारु बेसी देखो thermal power station मानकरे सबुठारु बेसी कोन होइथाय हमरो contaminated gas निर्गत होइथाय नहीं. अदर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज कोगुड़ा करतंती जो माने कि बेसी एयर पोल्यूशन करिथांती सेउडी को होले सीमेंट स्टील और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गुडी को. किंतु ए मानक ठारू सबुठारू बेसी कोठी ना थर्मल पावर स्टेशन मानकरे हमरो कंटामिनेटेड गैस निर्गत होई थाए. सम ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज आल्सो रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स. टॉक्सिक फ्यूम्स मींस हार्मफुल गैसेस मध्ये रिलीज करिथांती along with smoke बहु मात्रा रे धुआं मध्ये निर्गत होई थाए. Here we can see in this is the picture of Rourkela steel plant. एठार तुमे देखि परथुवा केमती हमरो धुआं माना निर्गत होची. तापरे आसला हमरो this is the picture of steel plant and this is cement factory cement plant. तापरे आसला हमरो
आमर थर्माल पावर स्टेशन अच्छी कोड़ी आमर जो तालचेर अच्छी तार पिक्चर देखि पारुथबो एवं एई सब मानक ठारू कोन बहु मात्रा रे आमर स्मोक धुआं जोटा कि आम देह क्षतिकारक अटे ताहा निर्गत होइथाय कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन सो दिस इज द समरी टाइप hope you have understood all the points. Let's see what are the points. Large number of industries spew dense smoke from chimneys. The cause, right? This smoke is produced by various fuels such as coal, coke, furnace oil. When these are burnt, where does this smoke go? They mingles with the atmosphere, spheric air. It pollutes the air. This smoke coming from where? Different types of industries. They polluted our atmospheric air. This polluted air contains obnoxious gases. बहुत अप्रीतिकर आमर अस्वास्थ्यकर गैसेस गुड़िक धारण करिथाय तापरे सेथिरे मध्य एस एवं डस्ट पार्टिकल्स मध्य रहिथाय so our lungs become garbage dumps of these pollutants. Thermal power stations, cement, steel and ore processing industries are responsible for high amount of air pollution. एगुड़िक आमर एयर पोल्यूशन बेसी मात्रा रे दायी अटंती. Okay dear students, I hope you have understood this chapter. Okay, so now discussion of the question answer time. Let's read the questions. I hope you all of you understood the chapter and you will able to answer all the questions easily. Yes. The amount of pollutants that enter our body is the largest through death. What will be the answer? There are 4 options. The amount of pollutants that enter our body is the largest through polluted air, respiration, or none of the above. Which one is the right answer? Yes, tell me the answer. Option C. Option C, contaminated food. First read all the things, all the points. The amount of pollutants that enter our body is the largest through which? Largest amount of pollutants enter our body. Option A. Option A. Very good. What is that in option A? Read that one. Option A रे जहाँ अच्छी ताकू पढ़ो कौन लिखाई छी? Respiration. Respiration. Yes, respiration. Nahi? Very good. Respiration is the right answer. So, number 2, a man can live without death for a month. Yes? Food. Food. Option A, food. Very good. Without food, we can live for a month. A man can't live without death for more than 2 to 3 minutes. Option What D. else? Air. Option D. Air. Very good. Next, air is a mixture of gases comprising of dash percentage of nitrogen. In our air composition, what is the percentage of nitrogen? 78. Option C, 78. Very good. 78. Next, due to air pollution, our death slowly become garbage dump. Air pollution द्वारा हमारा बॉडी रो कौन धीरे को Option B, lungs. Option B. Option C. Option B, lungs. Option B, lungs. Very good. Lungs. B, lungs. Number 6, the most tragic industrial accident at Bhopal occurred Option on B. Option B. Option Very B. good. Very Option good. B. 3rd December 1984. So number 7, it is estimated that an average adult exchanges dash of air a day. Yes? 15. 15. Yes, 15 kg. Very good. The amount of oxygen in the air is, what is the amount of air? 21%. Yes, 21% of air.
Next, over death local people were killed in Bhopal industrial accident in 1984. What is the Option D. Option D. option D? 4,000. Okay. Option D. Option D. Next, Option D. Yes, very good. The chemical plant operated by Union Carbide was in Kothare. Bhopal. Option A. Bhopal. Option A. Very yes. Option Which A. of the yes, very good. Which of the following is most dreadful for our body? ଆମ body ପାଇଁ କୋଉଟା ବହୁତ frightful ମାନେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଅଟେ କୋଉଟା? Contaminated food, polluted air, polluted water or sound pollution? Which one? Tell me which one? Very good. Option C. Polluted? Option C. Option C, polluted air. Nice. Very good. Most of the industries spew death from their chimneys. Chimney माध्यमरे कौन निर्गत होइथाय? Which option is Option right one? C. Option C. Very good. Option C, Option C. death, smoke. Yes. Very good. Next, the major constituent of air is कोटा अधिक मात्रा रे थाए एयर रे आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टेल मी द आंसर Option C. option Option C. C. Very good next the industries that discharge highest amount of smoke and ash into the air are ए भितरु को इंडस्ट्री टा बेसी मात्रा रे हमर स्मोक निर्गत करिथाय कोडा Option B. Option? What have Option very B. Good. Option B. Option B. Yes, very good. This is the right answer. Thermal power station. Very good. Next, the air is said to be polluted if what will be the right one? The oxygen level gets reduced, irritating gases enter the atmosphere, the composition of air is altered, or all of the above. What will be the right one? Sound Option nodal C. hypothesis? Option C. Option C. Okay. Option C. Let's read all the options. Option D. carefully. All the above. Yes, all of the above because all Option are D. the causes of. Yes, option D is the right one. All of the above options are right for this polluted. See, the oxygen level gets reduced, then also we call it polluted. Irritating gases enter the atmosphere, then also we call that air is polluted. The composition of the air is altered. जदि composition of air जदि altered हेगला ताले हमें मजो कहिबा कोन ताहा polluted हेगला. Very good. You have answered so well. Write down this question. You will write in your homework copy and show to your teacher. Dear students, now I know all of you are very much excited to go to your cousin's house because this Dasera holiday is very much special from all the holidays because in this holiday we used to go to our cousin's house, we visit to different places, also we eat so many delicious food also. Yes or no? So try to go to the village area and to apart from this urban area. Am I right or not? Urban area not safe for our health. So plant trees more and more and intake healthy air in your body. So dear students, I hope you understand this chapter, first part of the chapter very well. And in this holiday, as you are in class 10, you have to concentrate in your study also. So because there is no much time to practice for your annual exam. Yes or no? So happy Dasera to all of you.